जनाब, हमने अहाते को महफूज बना दिया है। ठीक है। अर्तुगरुल साहिब किसी भी वक्त यहाँ होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुल्तान ने आपको सलाम भेजा है। वह आपकी खिदमत से बेहद खुश हैं। कभी कभार हमें गुनाह नात में मामलात में बुरे लोगों की ज़रूरत होती है, जैसे कि हमेशा पाक और साफ होना चाहिए। वुज़ू के ज़रिए इसको साफ करना ताकि एक दिन रियासत अपनी गंदगी में दम घुटकर ना खत्म हो जाए। सुल्तान ने आपके लिए एक नया मिशन दिया है, मेरे लिए बड़ा शर्फ है। काराचैसर को फतह करें। काराचैसर एक जबरदस्त किला है। तो हम कस्तियानिया तक तमाम सरजमीनों को फतह कर सकेंगे। और अब फतह का वक्त आ गया है। आपको ये जाहिर करना होगा कि आप कमज़ोर हैं। किसी को भी ये ना लगे कि आपकी माली तौर पर या असली तौर पर कितने खतरनाक हैं। मैं पुरस्कुर नजर आने की कोशिश करूंगा। कस्तियानिया में मौजूद हमारे जासूस के मुताबिक उनका मनसूबा यह है कि वो हमें यहाँ इस ज़मीन से भगाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा मनसूबा उनसे ये सरजमीन लेने का है। तमाम दुश्मन मिलकर एक कोत होंगे और उनका अपनी पूरी कुव्वत से हमला करने का मनसूबा बनाएंगे। हम तुर्क अपनी कुव्वत से शहीद होने के लिए जाएंगे। इसकी वजह से हमें उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई करनी होगी। बिल्कुल। दफा दुश्मनों की सरजमीन पर शुरू होता है, वरना रियासत का वजूद ख़त्म हो जाए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, वो गौर से सुनना। कस्तियानिया में मौजूद सुल्तान का जासूस आपको मालूमात फराहम करेगा जो ईसाइयों के टेम्पलर का जासूस है। वो बज़ात खुद एक शैतान है। उसका मकसद सलेबी को हमारी ज़मीनों पर आने में मदद करना है। जब तक हम टेम्पलर के जासूस का नहीं देख लेते, हम काराचैसर को फतह नहीं कर सकते। मैं उसे कैसे तलाश करूंगा? कहाँ? कहाँ? हांगली, हानली, हाँ, बाजार।
क्या हुआ? हमारे आदमी ने हम पर हमला कर दिया है। हमारे आदमी ने। पागल बेवकूफ। कलचत्रीनिया से सुल्तान का जासूस। हाँ, ली बाजार। सलीबियों के सरदार का नाम बताएगा? किसको बताएगा? बेगैरत कुत्ता। भाई, उसने एक चेहरा ढाबा शख्स को जो आपने बताया, उसने बताया उसकी बुद्धि बंद होगी। जब मैंने उससे पूछा, हाँ, तो मैंने हमें एक बड़ी आफत से बचा लिया। शुक्रिया। और वो दूसरे, वो कुत्ते जो सामने नहीं, लेकिन मेरे भाई किसी तरह वो दूसरे सामने आएंगे। अब हम इससे चौकस रहेंगे। हमारी जगह मुख्तलिफ हैं। इस मुल्क में हर रोज़ मुहतारा होगा। वो चालू पर चालें चलेंगे। उनकी साजिशों को ख़त्म करने के लिए हमें इस ज़बान में बात करनी होगी। भाई, इनकी ज़बानें काट देते हैं यार, इन ज़ुलूल को खामोश कर देते हैं। इस मुबारक सफ़र में, हमारे जंगों में जो हम पर छुप कर हमला करने की कोशिश करेंगे, हम उन पर गाट लगा कर करेंगे। पहले हम अपने शहीदों को दफन कर लेते हैं, फिर हम हानली बाज़ार की तरफ निकलेंगे। ठीक है भाई। बेटा, और मत कहो मुर्दा जो अल्लाह की राह में मारे जाएं। वो बिल्कुल जिंदा हैं, मगर तुम्हें इसका शऊर नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी ज़ुबान, अपने जिस्म और अपने हाथों पर नज़र रखो। अल्लाह के अलावा किसी से रिज़्क मत मांगो। अपना हुनर और अक्ल बुराई के लिए मत इस्तेमाल करना। मैंने एक हाथ दिया, मैंने एक हाथ दिया, मैंने एक हाथ दिया, एक हाथ लिया, मैंने एक हाथ लिया, मैंने आपसे एक हाथ लिया। अपने आप को तकलीफ मत पहुंचाना। और जो हराम है उसको मत देखना। दर्द का दरमा अल्लाह से पाकर शफा उसी से मांगना। मैं अपने उस्ताद के काबिल बनने के लिए मेहनत करूंगा। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। अल्लाह उसे मुबारक करे। गुंदूस, गुंदूस, गुंदूस रुको। मेरे भाई,
गुंदूस मेरे भाई, गुंदूस। मत रो मेरी जान, क्या हुआ है मुझे बताओ। मेरी जान मत रो, मत रो। उसके पूरे चेहरे पर खून है। आ, तुम एक बच्चे को नहीं संभाल सकते। खलीमा सुल्तान, कसम से मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बच्ची, माँ ने लोहे की तलवार की तरह तेज बनाने के लिए होती हैं। तुम बार बार उसे गले लगाओगी और जब ये रोए तो उसे चुप कराओगी तो तुम एक मर्द नहीं बल्कि बुज़दिल को बड़ा करोगी। बहुत शुक्रिया। मेरा गंदूस अपने पापा और चचा की तरह एक बहादुर नौजवान बनेगा। गंदूस असाक का पहला मरीज है। हमारा ज़हीरा कैसा चल रहा है? अम्मी जान, बस थोड़ी देर में तकसीम शुरू करने वाली है, लेकिन आजकल खाली हाथ वापस आए तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तुम अपने काम का ख्याल रखो, मैं गंदूस पर नज़र रखूंगी। मेरा शहजादा। बच्चों वाली ख्वातीन, बराए मेहरबानी थोड़ा आटा लेने के लिए कतार में आ जाएं। बुजुर्ग और बीमार गंदम लेने के लिए इस कतार में आ जाइए।
Ulu Bey'ine verirken avradına bu laflar yakışır mı? Haddini bilesin bu çiçek. Şimdi ersamız bu kadardır. Kardeşlik de bereketlensin. İstemeyen de çekip gitsin. İnsanın çilekeş havarileri, Musa'nın ticaret bilen sürgünleri, Muhammed'in yiğit savaşçıları, Simon'un pazarı gücünüze güç katsın, keseleriniz altınla dolup taşsın, mallarınız değer bulup, mülkünüz çoğalsın diye hizmetinizdedir. Kalabalıkta Sultan Alaaddin Cansu'nu atacaksın abi. Gözlerin senden onları tanımaz. Gönlünden senle yürüyeni bilmezse cengi çoktan yitirmişsindir kardeş. İyi. Bakalım burada pusatımızın kısmetine ne düşeceği. Kardeş, pek durursan kısmet pusatımıza değil, kesimize düşer. Kesin kardeş. İpeyi kaşmirle buluşturan, şaraplarınızı lezzetle coşturan, sofralarınızı baharatla büyüleyen, evlerinizi kumaşlarla süsleyen, Ballı Pazar'ın sahibi Simon sizi bekler. Gelin, gelin, gelin. Beni takip edin. Kardeş, bu yerden bitme. Yavrudaki gırtlak bizim köşelere denk dur. Mevtarda böyle böğürür, yerden bitme. Pazarda bu sırtı bizden sana söyleyeyim. Pazarı kurmak kimin aklıysa bundan korkulur abi. Yani. Konstantiniye'deki ahmaklar nasıl olur da kim gibi sultanın cansusundan saklayamaz? Tapınak şövalyesi olduğunuzu bilmiyorlar ama efendisi bu. Haçlı ordusuna, papaya hizmet ettiğimizi biliyorlar ama. Bu kesinlikle Büyük Üstad Benediktus'un suçudur. Bunun bedelini ödeteceğim. Bunun bedelini onlara ödeteceğim. İlk fırsatta bu hadiseyi tapınak şövalyelerini yüce konseyine götüreceğim. Ahmaklıkları yüzünden neler olacağını düşünmezler mi ha? Ya İznik'ten Konya'ya kadar kolları uzanan yapımız çökerse? Ya Sultan Alaaddin'in ordusu Haçlı ordusundan önce gelip bu toprakları fethederse? Lanet olsun. Kim olduğunu bile öğrenemedik. Ne yapacağız efendim Simon? Konstantiniye'den gelen adamı yakalarsak her şeyi çözebiliriz değil mi? Pazar bugün açılıyor. Binlerce adam olacak. Onu nasıl tanıyacağım? Konstantiniye'den geldiğine göre sultanın casusu sıradan biri olamaz. En güvendiğimiz kişinin kılığında olacaktır. Olsa olsa bir şövalye olacaktır. Sizden korkulur efendi Simon.
şövalye pençelerinin arasına düşsün. Uzun bir kışı, yakıp kavuran cehennem gibi bir yazı ardımızda bıraktık. Keselerimiz çil çil altınlara aç. Uğursuz kış rüzgarları yüzümüzü kesinceye kadar pazarım da, hanım da hizmetinizde. Elbette satacak malı ve kesesinde altını olanlar. Konstantinopolis'ten Çin'e kadar dünyanın en değerli mallarını bu pazarın tezgahlarında bulacaksınız. Mallar sizinse tezgahlarınız da, tezgahlarınızdaki malların emniyeti de benden sorulur. Bilenler bilir, bilmeyenler anlatsın. Bu pazar Simon'un pazarıdır. Gözünüzde, gönlünüzde altına doysun dilerim. Simon Efendi, Bizans'ın imparatoru Yohannes Batakis ise sen de bu pazarın imparatorusun. Çok yaşa Simon, çok yaşa. Çok yaşa. Kardeşim Maria bu akşam sizin için büyük bir hazırlık yaptı. Herkes bu büyük lezzetin tadına baksın. Kaya boyundan Ertuğrul Bey. Demek yolun pazara da düşermiş ha. Çavdar Tatarlarından Ural Bey. Duydum ki pazarlar yiğit görmek istermiş. Biz de girelim dedik. Onca yola şu postları satmak için mi geldin Ertuğrul Bey? Değil bana. Pazarda hiç kimse. Biraz dünyanı tanı Ertuğrul Bey. Tanı şu dünyayı. Bak adamlar Çin'den, Venedik'ten, Hindistan'dan bir kervan dolusu mal getiriyor. Sen burnunun ucundaki pazara 3-5 leşin postunu getiriyorsun. Bak şu adama. Her gün kesesine senin ömrün boyunca göremeyeceğin kadar altın giriyor. Niye biliyor musun? Pusatı yerine zekasını çalıştırıyordu ondan. Aman ha dikkatli olun. Siz mal alıp satmasını da bilmezsiniz. Postlarınız ucuza gitmesin. Babaya eliniz boş dönmeyesin. Al Bey. Pusatımın altına kıvranırken altınlarını feda etmek isteyen nice insan tanıdım. Lakin altınlar için pusatını feda eden bir yiğit tanımadım. Zeki adamsın Ertuğrul Bey. Bak buradaki adamlar bugün pusatın cengi peşinde.
Paralar benden. Sakin ol. Adam hızlı değil. Geliyor soysuz. Hazır ol. Ama efendim, şövalye. Bir şövalye değil. O aradığımız casus. Ellerini ve ağzını sıkıca bağlayın bu adamı. Bize canlı lazım soysuz. Abi, burası iyi sanki. Burada posteri satabiliriz. Tezgahı buraya açalım. Emrin olur beyim, emrin olur. Ya, ulan kardeş de burada olaydı. Olaydı da hamallığı ona yaptırırdık. Hadi bismillah. Ben etrafı kolaçan edeceğim. Tezgah size emanet. Turgut, buyur beyim. Sen de bu olayları alacağım testleri olacağız. Emrin olur beyim. Bunca altını ne yaparsın merak ederim Simon Efendi. Merak iyidir Ural Bey. Duydum ki Toplamış Bey de senin ne altlar karıştırdığını merak edip dururmuş. Herkese senin hakkında sorular sorarmış. Uğursuz köpek. Belasını arıyor. Vakti gelince onun icabına bakarsın. Sana iyi haberlerim de var. Sultan Alaaddin'in has adamı neydi adı? Saadettin Köpek. Heh. İşte o. Konya'dan gelen bir tüccardan öğrendim. Sultanın sarayına vezir olmuş. Gayrı arkam sağlam demektir. Konya'dan gelecek mallar bundan sonra senden sorulacak. İyi kazanacaksın. Eğer yanlış
Padişahoğlu Ertuğrul. Cenk'te mahirdir. 3-5 leşin postunu satmak için gelmiş. Ama sanki gözleri başka bir şeyin peşindeymiş gibi.